Hello, friends. Welcome to Global Macro and Market Discussion with SD. मैं हूं SD शानंदो दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट. काइंडली नोट, ये जो वीडियो है ये मैं काइंड ऑफ खुद के लिए बना रहा हूँ, इस ऑफ अ वीडियो लॉग ऑफ माइंड, कि मैं क्या सब सोच रहा हूँ. इट विल हेल्प मी टू गो बैक इन टाइम एंड सी द वीडियो. इन एडिशन टू दैट आई एक्सपेक्ट कि वीडियो जो बन रहा है ये मेरे जो लर्नर्स है बोथ फ्रॉम CCMT कोर्स और द रेनबो कोर्स की, उन दोनों को ही हेल्प होने वाला है. एंड इन जनरल ऑल्सो आई थिंक दिस, जो भी देखेंगे इसको आपको एक आइडिया लग जाएगा अबाउट द ग्लोबल मार्केट्स, क्या चल रहा है, प्लस ओवरऑल ग्लोबल मैक्रो व्हाट्स कमिंग अप. काइंडली नोट, जो डिस्कशन मैं कर रहा हूँ ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ that you should not trade based on others. किसी का सुन के ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. That is one of the fastest way of losing money. That's why हम लोग सीखते हैं, we learn. So let's start. कि ये जो हफ्ता है ये this week is filled with mega risk, and it's filled with possibility of traps in the market. So you have to manage the risk exposure, which is basically stop loss quantified by quantity is your risk exposure to the market. But overall मैं कह सकता हूं कि in this high volatile market, tight stop not going to work. So it's better तो हम लोग क्वांटिटी के जरिए अपना रिस्क मैनेज करें. फर्स्ट वीक वैसे PMI डेटास, रिमेनिंग PMI डेटास आर कमिंग अप फ्रॉम यूरोप एंड सम अदर इकोनॉमीज, बट ये लोग उतना मैटर नहीं करेंगे. दे वोंट मैटर मच बिकॉज द फोकस विल बी ऑन later half of the week, and especially on Tuesday where we have US election, US general election, where Donald Trump and Kamala Harris are getting head to head who is going to lead the free world. So overall, I personally think Donald Trump is going to win the election, largely for several reasons. First of all, Donald Trump has the momentum, he has the popular support. Secondly, the Kamala Harris's appearances has been very terrible. He could not present any viable economic model to work with, means largely he is representing the similar Biden presidency. And more importantly, why she could lose is, I personally do not think, or looking like she does have the backing of all the Democrat or say Democratic machine. I think she's an outlier. She is not much of a desired by his own camp as a president. So that is another major one. And I think President Donald Trump, if it turns out to be a fair election, can be the next president of the United States. And if very aisa bhi, this possibility is also there that Republicans will control the Senate, Republicans are going to control the House. That means a single party majority in 3 presidency, the Congress, as well as the Senate. Tino jaga Republican wave can come. But no one can predict election, and this is not a prediction. This is what I think. And if Donald Trump wins, I think with his policy approach, we can see further rally into US equities, a big comeback with his tax cuts and regulation cut promises, which he has usually followed through. Though equity market bullish, US bullish will help equities, but his tariff plans will keep pressure on emerging market equities. Dollar can significantly go up because interest rates can go up in both the case after the election, because both have planned to increase the US deficit. So the impact could be seen on long-term interest rates, and as long-term interest rates goes up, dollar is likely to see upside push. But it is going to be remain a high volatile event. Problem is, suppose something happens, say it's bullish, and we jump to buy on the after the US election, getting a signal on Wednesday.
Now that creates a major problem because another mega risk event is coming up, that is on Friday. Before Friday, we have Bank of England interest rate decision. Obviously, we have our regular crude and natural gas inventories, but a Bank of England rate decision is there that is influential for GBP. But more importantly, at the end portion of the week, we have Federal Reserve interest rate decision. Fed is likely to cut by 25 basis points as the market is expecting, matlab 0.25% rate cut. However, these two event ka combination creates possibility of a trap. You jump onto Wednesday and with the Fed market reverses. Whichever way, I'm not saying that it could be bullish or bearish, but this could be a trap in set with this kind of two mega events being associated one after the other. So it's very important we carefully manage the position during this time and wait for the clear signal when the two volatile events are done with, that which side market is hinting at. Anything can happen with these fundamental date events. We cannot fully rely on technical analysis during these periods. तो हमें carefully इस market को treat करना होगा. Now let's look at the major piece of major market. What's happening? It has opened up. Nifty is under pressure. That is likely because overall global market has been under pressure. I'll come to Nifty, but we'll start with the dollar. And that's interesting. Dollar is down almost more than 0.5% on Monday morning. So early currency market is moving. And that is kind of we can say maybe before US election, that's a move another way, or could be a preparation that interest rates can decline after US election or some events or with the Fed. And as interest rates will decline, dollar is preparing for that by marginally going lower. So dollar down on a Monday morning is one of the significant move. I can see Euro USD is up. So some changes happening in the currency space very early. So market, I think, is taking a cautious. Has been bullish on the dollar for quite some long. Now it is reversing. Euro is getting strong. Today we got a buy signal, clear buy signal. This was the buy day. Once buy day ka closing ke above it goes, we tend to buy. So now this was a clear buy hint, but it's likely to remain very, very volatile. It's too early to say that yes, dollar has reversed for sure. But dollar bullishness जो है, that has definitely come to an end. But एक चीज ध्यान रखना होगा, डॉलर बुलिशनेस के साथ साथ जो बड़ा था, that is gold. Gold has been very bullish. तो gold कैसे behave कर रहा है in this period with the dollar weakness, हमें फोकस जरूर रखना पड़ेगा इसके तरफ. Momentum is fading, so will not be wise for me कि hold the dollar position. मेरा जो remaining dollar position है उसको भी मैं square off करना पसंद करूंगा now. As the Dow structure has arrived, I got a sell signal name, and its clear exit signal has come over and over. Now, with the dollar, I'll stay on the sideline. Euro is becoming interesting. I want to play this Euro long. I will see how it goes with the, obviously, currency market India में बंद है, तो हम लोग ETF के जरिए, this is not a trading, this is kind of a swing investment, swing as currency allocation, rather we can say. तो US dollar is morning से weak है, that's very, very interesting. आफ्टर यूएस डॉलर मैं थोड़ा रेट्स को देखना पसंद करूंगा. रेट्स क्या हुआ है सो फार. रेट्स मार्केट विल हीट अप इन द इवनिंग व्हेन यूएस ओपन्स अप, बट ओवरऑल मैं देखना चाहूंगा कि व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन द रेट्स, एंड दिस रेट्स हैव बीन वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो डॉलर को फ्यूल कर रहा है. एंड दिस इज द इंटरेस्ट रेट्स. लास्ट जो हम लोग डेटा है वहां तक has been very, very bullish. So interest rates have been pushing higher.
सो ये इंटरेस्ट रेट का हायर पुश इज अ वार्निंग, मतलब एक वार्निंग साइन फॉर मी, क्योंकि मैंने जो बोला था, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जानते हैं कि मैंने हाईलाइटेड दैट वी आर इन अ रिसेशनरी साइकिल. थ्री थिंग्स आई एम लुकिंग एट: इंटरेस्ट रेट्स, चाइना एंड जियोपॉलिटिक्स फॉर दिस टाइम अराउंड. एंड दिस इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप इज नॉट अ गुड थिंग. मार्केट में क्या दिखने को मिल रहा है कि ऑल द स्प्रेड्स, all the important spread like long term minus short term, they are going up, they are steadily going up. Let me hide this and open this normal chart for you. Anybody will, this is going up, and this is going up like, this one is going up like sharply. The way it has gone up since September, this is, you can see from September onwards, it is not fully driven by Federal Reserve. फेडरल रिजर्व इसको पुश नहीं कर रहा है, मार्केट इसको पुश कर रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स को मार्केट हायर पुश कर रहा है. एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर कंपनीज हु वांट टू रीफाइनेंस देयर लोन्स. So the more the interest rate goes up, pressure goes on dollar financing. Dollar will become costly, and this is not looking like a very good situation interest rates wise. So this is will remain as ये मेरा एक concern रहेगा ही, interest rates. After looking at interest rates, let's look back to some of the equities. I'll go back to different equities में जाएंगे, but सबसे पहले मैं highlight करना चाहूंगा चाइना. चाइना, क्योंकि चाइना has been weak, and China is one of my factors कि this can cause much bigger recessionary impact. Now, China, after the stimulus, this was the rise in the stock market. Now, जो लोग क्लास किए हैं, you know that I highlighted that stock market in this time can be an early barometer to suggest whether the stimulus is working or not. So far, the stimulus is not working. China will have a very important meeting this week, and that's coming associating with US election. साथ में जियोपॉलिटिकल फ्रंट में इजराइल ईरान टेंशन हैज गॉन बैक, gone higher with Israel attacking. Ukraine Russia tension remains high. So overall geopolitical, China and interest rates, तीनों साइड प्रोग्रेस हुआ है. प्रोग्रेस मतलब which can be the trigger to push us into a bigger decline, कि ओवरऑल इकोनॉमी तीनों का प्रोग्रेस हुआ है. बट डेफिनेटली दिस लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहा है, ये मेरे लिए कंसर्न रहेगा फॉर ओवरऑल स्टॉक मार्केट. आई थिंक मार्केट जो है वो प्रॉपरली, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स रादर, market participants are properly मतलब discounting this risk of interest rates going higher. And if inflation really joins in, inflation continues to march higher for any reason whatsoever in the coming quarters, this interest rate concern will be a major concern, and this can be one of the trigger definitely. तो चाइना देखने के बाद लेट्स लुक एट डिफरेंट मार्केट को थोड़ा देखेंगे, और इसके लिए मैं अपना फाउंटेन ऑफ गोल्ड सेटअप का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि इसी के जरिए आई डू द ट्रेडिंग. आई यूज दिस वन फॉर ट्रेडिंग, एंड आई कैन सी अ मार्जिनल करेक्शन, बट ऑस्ट्रेलिया नॉट इन अ हेल्दी मोड, not looking good. Let's look at New Zealand. This is the picture. New Zealand not so healthy. I won't say it's a mega sell, but it's quite, it's buy trade win probability अगर देखा जाए, that is still higher, क्योंकि long term trend जो है that is अभी भी bulls के साथ है. So overall, but we are going through a major correction, no doubt. In either way, many ways we are going through major correction. So I've increased the size of the tables. This will increase soon, and today I think net is a bit down for me. I don't know, morning euphoria or something. So Nifty crossing down, short Nifty, weekly game, then that's great. मैं ऐसे अलर्ट छोड़ देता हूं मेरे लिए, जो मुझे हेल्प करता है कि
कहाँ कहाँ क्या सेल करना है नहीं करना है वो डिसीजन लेने में। So Nifty has been weak. We'll be coming to Nifty soon. So New Zealand, ये मैं हाईलाइट किया था लास्ट वीक की मुझे वीकनेस दिख रहा है अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट, और अक्रॉस द ग्लोबल मार्केट जब सिंक्रोनस वीकली वीकनेस दिख रहा है एंड that is also in a recessionary period, I'll be very cautious regarding this, and different capacity I'm holding short positions in different indices. China I've shown you. Let's look at South Korea. Nikkei has not been good. Look at South Korea, very bad. Look at India, more than 1% down. It has not been a very bright case. It has been a new opportunity. However, ये white cross जो है वो outside the candle body, तो हो सके we might see a bounce back later on. 125 मिनट चार्ट में हम लोग गए हैं फॉर निफ्टी 500 के लिए। आई थिंक डेली ठीक रहेगा। 125 मिनट में रैदर हम लोग निफ्टी को देखेंगे। सो दिस इज निफ्टी 500, नॉट बुलिश। सो जब बुलिश सिचुएशन नहीं है हमें बेस्ट होगा कि हम लोग जंप करके बाई ना करें। जैसे बहुत लोग जंप किए होंगे, जैसे लास्ट 2 डेज का बाइंग था, वी कैन सी विद द ग्रीन सॉक्स, not a great idea. So I'll not do it. I'll not anyway influence you to do whatever you can do. आप लोग जो चाहिए कर सकते हैं, बट मैं इसको बाई नहीं करने वाला हूं ऐसे मार्केट में। और साथ में सिर्फ यही नहीं, वोलाटिलिटी अगर देखा जाए, वोलाटिलिटी थोड़ा एलिवेटेड है। डिफरेंट मेजर अगर मैं देखूं वोलाटिलिटी का, हर मेजर से वोलाटिलिटी एलिवेटेड है। इट्स एन राइजिंग पाथ, राइजिंग पाथ ऑफ वोलेटिलिटी है। सो वोलेटिलिटी ज्यादा है, सेल सिग्नल है, नॉट अ ग्रेट टाइम टू बी इन स्टॉक। लेट्स लुक एट अमेरिका, मींस यूएस स्टॉक्स, द मदर स्टॉक्स S&P 500 आर बियरिश सिग्नल वी हैव। अब ये फॉल्स हो सकता है बिकॉज वी हैव यूएस रिलेटेड इवेंट। ये रहा सेल सिग्नल, उसके बाद वी सॉ शार्प सेल ऑफ। Now we can see bounce back मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन क्या हो रहा है इस वीक। फंडामेंटल इवेंट वाइज वी कैन सी बिग क्रेजी मूव्स, बट ओवरऑल इट्स नॉट लुकिंग हेल्दी। और मैं कोई भी पोजीशन ऑन अ फंडामेंटल मूव ऐसा नहीं रखना पसंद करूंगा जो मार्केट कंफर्म नहीं कर रहा है विद इट्स टेक्निकल। So market is not confirming any kind of buying heading towards the US election. अगर उसके बाद buying आता है, we can buy later on and then continue to ride there. But I'm currently holding short position in S&P 500 as well as NASDAQ. Now these positions I might reverse. I don't think I'll with this kind of structure, I'll be heading to the US election with these shorts. I'm open कि इसमें bounce back होगा because bounce backs natural है empty line से, but it's far away from buying. So maybe with Federal Reserve later on, अभी जैसे इसमें sell off चल रहा है, with the Federal Reserve के साथ later on we might get another round of sell off। मतलब US election के साथ buying आया, फेड के साथ कंटिन्यूएशन ऑफ सेलिंग आया ऑन फर्दर सेल ऑफ। सो ये सिचुएशन में बी वेरी केयरफुल व्हाट यू डू एंड हाउ यू ट्रीट द मार्केट दिस वीक। देयर कैन बी दिस इज एक्चुअली द बिगेस्ट ट्रैप देन कैन बी वन मूव with the election and a reversal move in not just equities, different asset class, and a reversal with the Federal Reserve interest rate decision जो बाद में आ रहा है। सो ये रहे इक्विटी का ओवरऑल पिक्चर। इंटरेस्ट रेट्स हम लोग देख चुके हैं, डॉलर वी हैव सीन। So I'll take a quick look at the commodities. Some of the commodities. First of all, I want to take a look at gold. What is going on with the gold? Gold has been in a correction. I think in trading, I've highlighted a timely exit is important.
So there was ample exit करने का बहुत मौका था यहाँ पे to get exit of the gold and not to get involved into the gold too much. So we don't have a buy signal yet. अभी तक मिला नहीं है. This is the sell signal continuing. Last जो correction bounce back that did not work out. हम लोग का जो level था देखिए, gold reached there and undergoing a correction opposite side. Obviously डॉलर का जो वीकनेस है वो गोल्ड को हेल्प कर रहा है, पर ध्यान देना होगा समहाउ ये जो आज डॉलर मॉर्निंग से काफी स्ट्रॉन्ग है, इट इज नॉट सिग्निफिकेंटली बेनिफिटिंग गोल्ड. सो गोल्ड कैन बी ओपन फॉर अ बिगर डिक्लाइन, विच गोल्ड आई हैव बीन बुलिश, वेरी बुलिश इज गोल्ड, बट थोड़ा सेंटिमेंट वे ओवर स्ट्रेच हो गया गोल्ड मार्केट में. So अच्छा खासा correction, maybe a move towards 2006, मतलब $100 down can really shake off the loose holders of gold. But that's holding, that's investing, but we are talking here trading. So trading में I'm not anyway buying gold right now. Am I selling? No, largely I'm not yet selling because बेहतर sell यहाँ पे है. The one counter that is the weakest था उसमें हम लोग सेल किए हैं. This is the silver. Now silver sell से exit करने का time which come with the short term momentum bullish. Now I don't trade unless the candle closes. Candle will close at 9:45. So after that we will continue. I'll be squaring off some of the positions. Now this is gold, silver is done. Let me check crude oil, what to do with the crude oil. Okay, sorry, silver, let me check in the daily chart as well. सिल्वर में तो ये बियरिश मौका था ही. डेली चार्ट में इंटरेस्टिंग है सिल्वर की, यहाँ पे काफी टाइम बाद वी गॉट अ सेल सिग्नल, ब्यूटीफुल सेल सिग्नल मिला है. नाउ टू सेफली सेल सिल्वर वुड बी बिलो दिस लेवल. ये लेवल के नीचे जब सिल्वर फिर से क्रॉस करना चालू करेगा अराउंड 32.45, that could be an area to short silver. And silver can definitely drop towards 31.3. सेंटिमेंट बहुत स्ट्रेच हो चुका था, बट हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ अभी भी कह नहीं सकते व्हाट्स गोइंग टू हैपन बिकॉज इट्स टू मेगा इवेंट्स आर कमिंग अप. बहुत बड़ा बड़ा मेगा इवेंट्स है सिल्वर में. So it is really difficult to say कि yeah, this is exactly going to happen. But overall, silver gold sentiment जिस तरह stretched है on the buy side, another bigger decline help करेगा silver को more जो weak holder है उसको निकाल देने. Another good one has been the natural gas. US, UK, these are moving to daylight saving. So हम लोग को थोड़ा timing soon adjust करना पड़ेगा. Timings will change. So correction मिल रहा है in NG में अगर कोई short है with this candle close, you will have to square off these positions. So natural gas has still bearish. मैं इसको buy का सोच नहीं पा रहा हूं. This is remain bearish. Crude oil, now let's look at, this is the energy space. Crude oil is after a small correction is making a comeback. I don't have a buy signal yet to buy, but it is at an important base level. Crude एक important base level में है 125 मिनट चार्ट में, और डेली चार्ट is kind of a mix. जैसे गोल्ड सिल्वर में मोर क्लैरिटी है ऑन द बिगर ट्रेंड्स, क्रूड ऑयल वी हैव लैक ऑफ क्लैरिटी, whereas natural gas very clearly bearish. क्रूड ऑयल इज नॉट क्लियर, देयर आर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, बहुत कई सारे रेजिस्टेंस है. चलिए थोड़ा इंडियन क्रूड ऑयल पे चलते हैं, देन विल प्राइस वाइज बेहतर होगा. देखिए यहाँ पे फ्लैट लाइन मतलब 6000 के पास रेजिस्टेंस, 6072 में रेजिस्टेंस, 5943 एरिया मतलब करंट जो प्राइस है उसके पास रेजिस्टेंस, लॉट ऑफ रेजिस्टेंस एरियाज. तो क्रूड ऑयल
जिस साइड भी सिग्नल दे इन लोअर टाइम फ्रेम चार्ट, मुझे लगता है कैन बी मोर रेंज बाउंड. इसको ट्रेड करना विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर द बिगिनिंग लेवल. यहाँ पे कई सारे रेजिस्टेंस है. सो दैट शुड वंस मुझे कंसिडर करना होगा कैसे मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं इन द क्रूड ऑयल मार्केट. सो इंटरनेशनल चार्ट को मैं इंपॉर्टेंस देता हूं इन केस ऑफ क्रूड ऑयल. सो हियर आई डोंट हैव अ बाय सिग्नल. की रेजिस्टेंस के पास अभी भी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है. सो टाइट रेंज में है क्रूड ऑयल. एंड विद द यूएस इलेक्शन अप्रोचिंग, आई एम नॉट थिंकिंग मच अबाउट क्रूड ऑयल. तो ये रहे मेरे आउटलुक फॉर द ओवरऑल मार्केट. निफ्टी का एक बार पिक्चर लास्ट में एंड करने के लिए देखेंगे. निफ्टी 500 हम लोग देख ही चुके हैं. सो व्हाट्स गोइंग ऑन विद निफ्टी, निफ्टी वो भी हम लोग देखेंगे. So what I'm getting is after correction a full red candle in the 125. So candle will be valid at closing. उससे पहले वैलिड नहीं. हम लोग डेली चार्ट में भी देख चुके हैं कि निफ्टी रिमेन्स ब्रॉडली बियरिश. मैं दूसरे जो चार्ट हाईलाइट किया हूं सोशल मीडिया पेज, इट शोज नाउ ब्रॉडली निफ्टी हैज बीन प्रिटी बियरिश. सो निफ्टी 500 से भी निफ्टी 50 है जो है वो ज्यादा वीक दिख रहे हैं. And I'm expecting much, looks like it can go for much bigger decline. अगर ये रेजिस्टेंस इट कैन होल्ड रेजिस्टेंस जो 24,300 पे देखिए लास्ट स्विंग, ये स्विंग के ऊपर जाना ही पड़ेगा निफ्टी को टू ब्रेक द बियरिश मोमेंटम. एंड इट्स नॉट रियली लुकिंग हेल्दी. सो मैं क्या करूंगा, जो मैं कर रहा हूं, मैं बियरिश साइड ही मेंटेन करूंगा पोजीशन. So not so healthy situation for bulls at the moment. So I hope आप लोग को बियर खेलना आता है. Different strategies or timing, knowing how to play different market helps. I hope मेरा ये वीडियो हेल्प हुआ आप लोगों को डिसीजन लेने में. बट प्लीज नोट, किसी का सुन के ट्रेड करना नहीं चाहिए. You have to make your own mind. Even if you are using, say, somebody else's setup, even if you are using my own this fountain of gold setup, you need to make your own mind about the trades. So all the best to you. Thank you so much for watching this video, and as always, happy trading.